दल के अधिकृत प्रवक्ताओं को फ्रिंज कह दिया। फ्रिंज का हिंदी न प्रणव भाई को मालूम है, न संजीव भाई को मालूम। आपको मालूम हो तो बताइए। अपने ही दल के अधिकृत प्रवक्ता, उनको आपने फ्रिंज कह दिया। आप कैसे फ्रिंज कह सकते हैं, हमें तो यह नहीं समझ में आता। आप भी तो इन्हीं रास्तों से गुजरकर यहां तक पहुंचे। यही गलियां थी जिनसे आप गुजर के यहां तक पहुंचे हैं मिस्टर मोदी। आप नहीं किसी को फ्रिंज कह सकते। आज आप फ्रिंज कह भी दें, कल यही नुपुर शर्मा, यही नवीन कुमार जिंदल आप ही की पार्टी द्वारा मुख्य धारा में लाए जाएंगे। कल का फ्रिंज आज का मेन स्ट्रीम है, आज का फ्रिंज कल का मेन स्ट्रीम बनेगा। हम आपके भाषण नहीं भूले हैं प्रधानमंत्री जी। सितंबर 2002 खैरलांजी गुजरात, उत्तर प्रदेश 2017 शमशान कपड़ों से पहचाने जाते हैं। ये वक्तव्य आपके हैं। आपको मैं याद दिला दूं, ना केवल आप उन्हीं रास्तों से गुजरकर यहां तक पहुंचे हैं, आप आज भी वक्त आने पर उन्हीं रास्तों पर चले जाते हैं। आज जो आपके नवरत्न पूरे देश में जो गुल खिला रहे हैं, जहर फैला रहे हैं, मत भूलिए वक्त आने पर जब विदेशों से प्रतिक्रिया बंद हो जाएगी, यह सब नवरत्न फिर से स्थापित हो जाएंगे, फिर से जहर फैलाएंगे, फिर से गुल खिलाएंगे। क्योंकि विदेशी मुल्कों ने गोली मारो वाले वक्तव्य पे कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, आज वो व्यक्ति आपके केंद्र में मंत्री है। लेकिन इन दोनों पर प्रतिक्रिया आई तो आपने उन्हें सस्पेंड कर दिया। आपको भी लोग देख रहे हैं, पूरा विश्व देख रहा है, मत भूलिएगा। आज आपकी गलतियों का खामियाजा देश भुगत रहा है। जो काम विश्व के अनेक देशों को भारत के खिलाफ लामबंद करने का जो काम पाकिस्तान 70 साल में नहीं कर पाया, आपने 7 सालों में करके दिखाया। 70 साल पाकिस्तान लगातार कोशिश करता रहा कि कैसे अलग अलग मुल्कों को भारत के खिलाफ लामबंद किया जाए। उसको हमने विफल किया, हमने उसको सफल नहीं होने दिया। आपकी करतूतों से आज आप सफल हो गए वो काम करने। विश्व हैरान है, जैसा कि मैंने आपको कहा, और देख भी रहा है कैसे 8 सालों में संवैधानिक संस्थाओं को आपने खुर्द बुर्द कर दिया। विदेश मंत्रालय एक ऐसा व्यक्ति चला रहा है जो विदेश मंत्रालय को अच्छी तरह समझता है। उसकी नाक के नीचे हमारे दूतावास भारतीय जनता पार्टी की प्रेस विज्ञप्ति बांट रहे हैं। कभी हुआ इस देश में? फ्रेंड्स ऑफ बीजेपी है ना विदेशों में, कहीं कई इनकी जाहिर और गैर जाहिर संगठन है भारतीय जनता पार्टी और संघ के, वो बांटे। ये दूतावास मेल भेजकर नत्थी कर रहा है साथ में भारतीय जनता पार्टी की प्रेस विज्ञप्ति। ये क्या हाल बना रखा है आपने? माउथपीस बना दिया आपने दूतावासों को भारतीय जनता पार्टी का। अब आपने इस देश को बहुत शर्मिंदा कर लिया। यह देश अब शर्मिंदा होने से इनकार करता है। हम शर्मिंदा आपकी गलतियों से नहीं होंगे। न सही वक्त पे आपने सही बात सुनी, न सही वक्त पर आपने सही बात बोली, और आज अलग अलग मुल्कों के सामने आपको गिड़गिड़ाना पड़ रहा है, सफाइयां देनी पड़ रही है। ये हमें बर्दाश्त नहीं है। भारत का प्रधानमंत्री, भारत सरकार सफाइयां देती फिर रही है। क्यों? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने गलतियां की हैं। ये कैसे बर्दाश्त होगा? अब भी समय है प्रधानमंत्री जी, चेत जाइए। और यह जो सांप पालने का शौक आपने पाला हुआ है, इस शौक को अब खत्म कीजिए। बीन बजाइए, सांपों को अपने बिलों में वापस भेजिए, क्योंकि अब ये सांप आपको भी डसने वाले हैं। फ्रेंड्स, over the last
weeks, we've had to face as a country a lot of shame. Can you please switch the mobile off? The entire world has a particular image of the country, of India. It's a beautiful image. An image of a country which is proud of the kind of disparate contradictions which it can take along with it. It has multiple cultures, religions, languages living in it peacefully, learning from each other. We have been very proud of this. And the world has been very surprised at the way India has, despite its contradictions, has managed it so well. Today, all that has changed. Thanks to one man, one party, which is Narendra Modi and the BJP. You haven't heard the Prime Minister speak a word. You haven't heard the Home Minister utter a word. You've definitely not heard Mr. Jaishankar speak on this issue of hate speech within the country. And three of them, mind you, are very, very fond of speaking. In fact, the External Affairs Minister, the one clip which went viral of his speech had words borrowed from Nehruji in it. Why doesn't he speak today? He can borrow from Nehruji, we don't mind. Nehruji belongs to all of us. Borrow from him, but for God's sake, open your mouth. Over the last 7.5, 8 years, the intellectuals of this country, the opposition of this country, retired bureaucrats, diplomats, have been reminding the Prime Minister of his Raj Dharma, have been requesting him to understand how this country, as large as India, is governed. It cannot be governed with a small heart and a small mind. But the Prime Minister not just chose to be silent or to ignore this advice. He chose to use his ecosystem, his parrot media, to discredit these voices, to demonize these voices, to silence these voices, by labeling them as Khan Market Gang, Tukde Gang, Award Wapsi Gang, anti-nationals. This is the way they tried to silence all of us well-meaning Indians who were worried about India, who were concerned about India, who were pained about India. You were able to silence some of us, not all. But today, when the world is speaking, we see a worried government. We see a worried Prime Minister. And the Prime Minister who chooses to immediately act when the world speaks, but silences the same voices within the country. And what kind of action was this? They suspend 2 official spokespersons of their party and label them as fringe. Now, how can the Prime Minister even afford to use these words? He's been through the same journey himself. I am pained when I use these words for him. But we have not forgotten his own speeches, whether it was September 2002 in Khairlanji, Gujarat, 2017 in Uttar Pradesh when he said Shamshan Kabristan, 2019 December when he said we can recognize these people by their clothes. We have not forgotten those speeches. You have not only come through the same journey, you still resort to the same language, the same tactics, the same stunts when you go for elections. Because the international community did not point out at the Goli Maro comment of one of your leaders, today that leader is an important minister in your cabinet. Because the global community reacted to what Nupur Sharma and Naveen Jindal said, you chose to act against them. What is the message you are sending to the world and to your own country?
Yet you will silence the voices of sanity within your country and immediately act when foreign countries ask you to act. Because yesterday's fringe is today's mainstream, we have every reason to believe that today's fringe will be tomorrow's mainstream. So choose your words carefully. The entire world has watched how we have done away with our constitutional responsibilities, with our institutions. Can you imagine our embassies distributing the press releases by a political party? BJP. It has never happened before. Why should the embassies be distributing BJP's press releases? What are the friends of BJP, so-called friends of BJP, doing abroad apart from raising funds for the BJP? What are the various named, unnamed, non-state players abroad which are protected by the umbrella of RSS doing? They should be doing this, not the embassies. Why is the embassy becoming a mouthpiece of BJP? We want to know. Enough of shaming our country, Mr. Prime Minister. Please make sure that all these snakes that you've nurtured are called back in their holes. That's where they belong. Because now is the time when the snakes are out to bite you. It's in your own good that you speak up. Thank you. Your questions, please. जिसमें 5200 बयान जो भाजपा नेताओं के थे गैर जरूरी थे, 2600 बयान ऐसे थे जिसमें संवेदनशील शब्दों का इस्तेमाल किया गया। इसके लिए 38 नेता चिन्हित किए गए। 27 को जो ताकीद की गई आपसे आप ऐसा कोई बयान नहीं देंगे, जिसमें कुछ पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, कुछ वर्तमान मंत्री हैं, सांसद भी हैं, विधायक भी शामिल। जब ये हो रहा था और इन्हें सलाह दी जा रही थी, इन्हें ताकीद किया जा रहा था, तब क्या सुनाई नहीं दे रहा था प्रधानमंत्री जी को? आप क्या कहना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री को इतनी समझ नहीं है कि इस तरह की भाषा इस देश में नहीं होनी चाहिए? अगर समझ नहीं है तो उन्हें उस पद पर बने रहने का क्या मतलब है? और अगर समझ है और फिर भी चुप थे, जानबूझकर नजरअंदाज कर रहे थे, फिर तो यह बहुत बड़ा अपराध है। पहले तो आप बोतल से जिन बाहर निकाल देते हैं,